Assalamu alaikum to my ITM class. I am going to go over the lab that I did today so that you have a record of how to set up a project, फाइल्स किस तरह से मैनेज करनी है अगर आपने उसके विज़ार्ड के थ्रू क्लास क्रिएट करनी है और फिर उसके अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस डालने हैं तो हाउ डू यू डू इट यूजिंग विजुअल स्टूडियो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विजुअल स्टूडियो अप. एंड दिस वाज अ क्वेश्चन जिसमें मैंने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करनी थी और उसके थ्रू एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करना है किसी तरीके से. आई एम सेइंग क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. आई एम सेइंग मुझे कंसोल ऐप चाहिए. आई एम गोइंग टू कॉल इट एम्प्लॉय लैब. आई एम calling my project employee lab and I am going to place it on my desktop so that I can then see के इसके अंदर और show how इसके अंदर चीज़ें manage किस तरीके से हो रही हैं. So I want to, as soon as this is done, I want to say कि मुझे क्लास बनानी है जिसके अंदर एक एम्प्लॉई को मैंने इन अ वे मॉडल करना है. So I am going to do quickly put this in so that I don't have to do this anymore. इसको मैं actually निकाल ही देती हूँ. I don't need this right now. I want to first create my employee class. So class बनाने के लिए I'll just repeat that you need, or you should, when you're working in Visual Studio, you should have your Solution Explorer open and your class view open at the minimum right now. और अगर ये आपके accidentally बंद हो जाते हैं तो you can go to view and look for them. So यहाँ पर आपको class view भी मिल जाएगा and over here you will be able to find Solution Explorer. In case आपका accidentally बंद हो गया तो आपको यहाँ पर ही से सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप ओपन यहाँ से फिर ओपन कर सकते हो if you're accidentally missing any of these two tabs जो नीचे नजर आ रहे हैं. Solution Explorer was right at the top, and sorry, Solution Explorer was like right at the top, and the other one was somewhere over here. So मेरा already, once you set it up तो ये already open होता है. You don't need to keep doing it repeatedly. I am going to say कि मुझे अपने project के अंदर, my project is called Employee Lab. It's already set up with a folder called header files, source files. ये वाली file already बनी हुई है. employeelab.cpp. You can see the name over here and you can see कि मेरा basic main का function यहाँ पे पड़ा हुआ है. I'm now going to say कि मुझे, I've right clicked here and I've said that I want to add a class over here and I want to call it employee. And as I was typing employee, you could see कि उसने suggest किया एक header file और एक CPP file के लिए नाम employee.h and employee.cpp. Those are good suggestions, so we are going to go with them. So मेरे पास class बन गई है and जैसे ही class बनी है, I got this file called employee.h over here that is already open जिसके अंदर class की definition लिखी हुई है. So I have class employee, curly bracket open, curly bracket close and the important semicolon that you shouldn't be missing. वो आपको automatically आपका IDE create करके दे देगा if you're using the wizard. If you don't want to use the wizard, आप ये सारा कुछ manually कर सकते हो, but basically that just makes it a lot quicker and उससे आपके errors कम होंगे because you won't accidentally be missing out semicolons and other similar parts in the syntax. ये मेरे पास corresponding इसकी, let me click here, employee.cpp बनी है. So important files right now are my employee lab.cpp, which is my project file, and then because I just created the class called employee, तो मेरे पास एक employee.h आ गई है जिसके अंदर खाली class पड़ी हुई है इस वक्त और एक employee.cpp पड़ा हुआ है which is empty except for this message over here which is saying कि आपने अपना सारा information यहाँ से लेना है. Essentially we're going to stick our prototypes of whatever we want in the class over here और यहाँ पर फिर उनसे associated actual code लिखेंगे. But इसको ताकि पता हो कि prototypes में क्या लिखा हुआ है तो this needs to know कि your employee.cpp needs to know that it is going to get information that it needs from employee.h. And then we also need to, अगर हमने यहाँ पर employee class के objects create करने हैं तो I also need to make sure कि यहाँ पर मैंने employee.h को include किया.
So this is a file from my project, so I'm just going to include it like this. ऑर्डर आप जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन दिस इज वन कन्वेंशन दैट आई यूज कि मेरी अपनी इंटरनल फाइल्स एक ऊपर वाले ब्लॉक में मैं लिखूंगी इंटरनल फाइल्स दैट आई वांट टू इंक्लूड, और ये सी प्लस प्लस की अपनी लाइब्रेरीज जो है वो मैं एक सेकंड ब्लॉक में नीचे डालूंगी, सो दैट आई कैन क्लियरली सी व्हाट आई हैव इंक्लूडेड एंड आई वांट टू क्विकली टेस्ट कि कैन आई नाउ इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉई. I'm calling my object employee1. My class is employee, and it is compiled and it is going to run. It is not doing anything right now, but I was just checking कि मेरी class existence के अंदर properly आ गई है नहीं. Again, this is in parallel to how you would declare regular variables in your earlier programming class. So if you could say, for instance, int counter, you are essentially saying कि मुझे एक variable चाहिए जिसका नाम मैंने counter रखना है and its type is going to be an integer. Now you have the ability to kind of create your own types however you want to. अभी हम इसको create करेंगे, but here you have said कि मुझे employee के type का एक object create कर दो और उसका नाम मैंने employee1 रखना है. So let's put some information into this class because it's again right now it's not doing anything. What we wanted to do was create a class that represents an employee where the aim is to set the employee's salary value, which means first thing we need is कि मेरे पास employee class के अंदर कोई salary hold करने का variable होना चाहिए. So I've gone to my class view, I've gone to my employee class and I've said कि मुझे इस class को एक variable add करके देना है. We can call it salary. उसको हम रखेंगे डबल टाइप का. एंड बिकॉज वी सेड के क्लासेस आप बनाते ही इसलिए so that you have the ability to keep things private, you have the ability to keep things not exposed to everybody else's access, तो हम इसको प्राइवेट करने लगे. प्राइवेट मैंने इसको डाला है तो you can see over here what has happened is इसने प्राइवेट लिखा नहीं है. That is because class के अंदर by default any variable member variable that you declare, it is actually private by default, so it hasn't written it. I would actually write it because इसके साथ मैं जब add करनी शुरू करूँगी चीज़ें तो then it is going to get a little bit confusing for me to keep track of कि कौन सी चीज़ private थी कौन सी नहीं थी, मैंने कौन सी रखनी थी नहीं रखनी थी. तो I'm just right off मैंने उसके साथ private लिख दिया even though मुझे विजुअल स्टूडियो ने जो सजेस्ट किया वो विदाउट इट सजेस्ट किया बिकॉज अगेन वो पहली वाली चीज़ थी और वो मैंने प्राइवेट की थी. सो बाय डिफ़ॉल्ट इवन अगर मैं प्राइवेट लिखती नहीं हूँ तो इसको समझा प्राइवेट ही जाएगा. पब्लिक मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, प्राइवेट मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना नहीं पड़ता, बट फॉर बेटर रीडेबिलिटी आई हैव जस्ट रिटन इट इन एक्सप्लिसिटली. So I have created a member variable inside my class employee called salary. So every time that I create an employee, like I have created over here, उस एम्प्लॉय के पास इस क्लास के थ्रू एक वैल्यू मिलेगी उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो कॉल्ड सैलरी एंड देन यू कैन मेंटेन इट फॉर दैट एम्प्लॉय एंड अपडेट इट या जो कुछ भी करना है. सो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अपडेशन, तो बेसिकली अभी हम अपडेट तो नहीं कर रहे लेकिन इस पहले आप सेट करोगे तो उसके बाद अपडेट कर सकोगे. सो वी वांट टू सेट अप अ वे to set the employee salary. So for this we want to add a function to my employee class. I'm going to say add function add करके दे मुझे and I'm going to call it set salary. इसको मुझे public करना है because I want to use it from my main from outside of this class to actually set something. क्योंकि इसने set करना है तो मुझे return type के अंदर कुछ भी नहीं डालना. So I can either select void from here or I can type void in. I want public access रखना था और CPP फाइल मैं यहाँ इसको रिफर करके दे रही हूँ दैट यू आर सपोज टू पुट दिस इंफॉर्मेशन इनटू employee.cpp. और सेट सैलरी को मैंने जब सेट सैलरी कॉल करना है तो आई नीड टू टेल द फंक्शन कि कितनी सैलरी मैं सेट करना चाह रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू ऐड अ पैरामीटर ओवर हियर बाय क्लिकिंग दिस प्लस आइकॉन एंड आई एम गोइंग टू से कि मुझे एक डबल टाइप का एक पैरामीटर सेंड करना एंड इन क्लास वी काइंड ऑफ
used the name S over here, so that is fine to use over here. So I'm saying okay. I forgot to, let me just try it out again. मैं कर रही हूँ add function. I'm saying set salary. I am saying return type void. Access is public employee dot cpp, and I am saying कि मुझे एक पैरामीटर इसको देना है डबल के टाइप का, और वो एस, उसका नाम मैं एस रख रही हूँ, एंड आई एम सेइंग ओके, वो सेट हो गया. सो आई set this up, and I am going to now write in. So this is saying add your implementation code here as an indicator that I'm supposed to write my own code here. यहाँ मैं basically कर रही हूँ, I want to say कि for the class employee, whatever value has been sent in as the parameter, pick that value up and use it to set a value for this variable, this member variable. So वो मैं इस तरह से करूँगी that I will simply say salary is equal to S. So the member variable salary that belongs to employee in this class is going to be set to the value S that has been passed in as a parameter. और इसको हम फौरी तौर के ऊपर इस्तेमाल करके देख सकते हैं. I'm going to remove this. Int counter मैंने हटा दिया. Won't need it. I've said employee 1 की salary set करें to some value. Let me run it to see. अभी भी मैंने कुछ आउटपुट नहीं करा है, so you won't see anything, but you'll see कि ये कंपाइल हो जाना चाहिए without any error. उसके बाद मैं कहूँगी कि because I couldn't see it when I want to see check कि वो ठीक तरीके से हुई है या नहीं, तो I want to set kind of a complementary function to set salary where I want to say कि मुझे salary get करके बता दो कि इस वक्त आपकी क्या set हुई है. I'm going to add another function. I'm going to go back class view में. I'm going to say add. I'm going to say function. I'm going to say I need a way to see what salary has been sent via the set salary function. इसने मुझे ना गेट करके देनी है सैलरी, सो आई वांट टू से कि मुझे एक डबल के टाइप की चीज़ आपने रिटर्न करनी है. पब्लिक वो होगा, ये वैल्यू उसने पिकअप कर दी है क्योंकि पीछे मैंने उसको बता दिया था. एंड आई डोंट नीड टू ऐड एनी पैरामीटर बिकॉज आई डोंट नीड टू गिव इट एनी इंफॉर्मेशन. आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन आप रिटर्न कर दो. सो रिटर्न मैं यहाँ पर करूँगी the salary value that is actually this one that you are seeing over here, ये वाली. I'm going to do one more thing. I was discussing this convention that is followed कि मेरे public वाले variables, member variables ऊपर आएंगे, variables and functions, and मेरे private वाले मैं नीचे रखूंगी. It's not necessary to do it, but it's just a nice way to organize your code. So I would recommend कि अपना कोड आप क्लीन अप करते जाओ जैसे जैसे आप चल रहे हो. So now I'm saying कि जो आपने एम्प्लॉय सेट की है, सैलरी सेट की है, सॉरी, उसको मुझे गेट भी करके दिखा दो. गेट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, and that means I can then use it as part of my cout statement. And this is basically saying कि employee one dot get salary जो भी रिटर्न करेगा चीज उसको cout करके आप दिखा दो. दिस मॉर्निंग इन द लैब यहाँ पर ना डिफरेंट किस्म के अगर आप यहाँ पर सेट सैलरी डालोगे, विच आई सॉ अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग, तो बेसिकली सेट सैलरी जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. तो सेट सैलरी कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो बेसिकली योर सी आउट वोंट बी एबल टू ऑपरेट. तो आप लोगों को एरर्स आ रहे थे. इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए यूज कर सकते हो गेट सैलरी को, बिकॉज यू सेट दिस अप एज अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू. सो यू कैन इमेजिन कि ये वाला पार्ट चलेगा. It will evaluate to the answer that it has written, that is being calculated inside the function. Calculation तो नहीं हो रही, आप actually बस उठा के return कर रहे हो, and that is going to become part of the cout statement and it is going to be printed on screen. तो अगर मैं इसको run करती हूँ, I am going to do a control F5, which is the same as, which is achieving the same as I was doing with the button click. तो उसने मुझे दिखा दिया है कि 1000 का सैलरी सेट हो गया है. Then we had a question where I had said कि इसको इंक्रीमेंट करने का भी तरीका डालें.
So if I have a function called increment my salary according to whatever percentage that I'm going to give you. So I'm going to add a function. I am going to say इसका नाम मैंने रखना है increment salary. I don't, for simplicity, I don't really need for it to return anything. जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रख सकते हैं. इस वक्त we don't want it to return anything. Access मैंने public रखना है क्योंकि I want to be able to tell the object to increment its salary. And I have said CPP फाइल मेरी यही है. पैरामीटर मैंने उसको एक देना है कि कितने परसेंट से मुझे अपना सैलरी को इंक्रीज करना है. सो आई एम गोइंग टू यूज अ डबल बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन ऑल ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर हम सैलरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं. एंड इन केस आई वांट टू से कि इसको इंक्रीमेंट जो है वो 12.5% का हो, तो आई एम गोइंग टू से डबल. एंड आई एम गोइंग टू से लेट मी कॉल द वेरिएबल इंक्रीमेंट और परसेंटेज कह लेते हैं. दिस इज सपोज टू बी a PER is what we used in the lab this morning. So I am going to say everything is set here. I am going to say okay. Increment salary के अंदर मैंने करना है कि जो salary इस क्लास का member variable है मैंने उसको अपडेट करना है. I'm going to say salary is now going to be equal to whatever it was originally plus the in the percentage. उसके हिसाब से मैंने increment लगाना है. So I'm saying I'm putting this formula in multiplied by salary. एंड अपने मैं मेन को थोड़ा सा अपडेट करूंगी एंड आई विल से यहाँ पर बता दो कि दिस इज द लेट्स कॉल इट द ओरिजिनल सैलरी. एंड लेट्स कॉल द फंक्शन जिससे हमने अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है. एंड लेट्स से कि इसको 10% से इंक्रीज करते हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू से कि मुझे सी आउट करते हैं इसकी इस वक्त सैलरी की स्टेट. सो इधर जब आप सैलरी कॉल गेट सैलरी कॉल करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जो कि आपने इससे बिल्कुल पीछे सेट की थी. एंड देन दूसरी दफ़ा गेट सैलरी करोगे बिकॉज आपने बीच में कह दिया उसको कि अपना इंक्रीमेंट आप उसको अप्लाई कर दो, तो यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट वैल्यू ओवर हियर. लेट मी जस्ट चेंज द लेबल. दिस इज गोइंग टू बी incremented salary and let me run it. I am doing a control F5 again. So उसने कर दिया. It's just looking really messy. I'm going to put in. So मैं बंद करके एक न्यू लाइन डालने लगी हूँ so that it doesn't look like this. \n. Doing another control F5. Control F5. And अभी मैंने इधर स्पेस डालना भूल गई हूँ. So let me go back to I'm putting a colon and a space in so it looks a bit reasonable when I display it. अब this is kind of reasonable और मेरा calculation भी ठीक हो रहा है. So I think we did up to this bit in class today. Let me move on. So there was a part where I said कि check if any of the member functions need to be set to const. So I will leave this as an exercise, but I will do the lab bit. So in my lab, I've actually said कि एक particular value इस्तेमाल करो, but that's fine. You can do it on your own. Essentially, I've shown